diagram. Determine frictional forces, यह भी इसका स्कोप में है, and their influence upon the equilibrium of the system. Apply sound analytical technique and logical procedure in solution of engineering problems. This is the course objective that a student should mind it, note it in your memory. Course content: introductions of forces in plane, forces in space, statics of rigid body we shall discuss, equilibrium of rigid body in plane and in space, in two-dimensional field and three-dimensional field, centroid and center of gravity, moments of inertia of area and masses, analysis of structure, trusses, frames and mechanics, forces in beams, frictions, and all these will be included and discussed in this course. And the books, I am recommending that Vector Mechanics for Engineers by Beer and Johnson. और सब किताब है, बहुत सारा किताब supplementary book है. You won't get the concept. In many books you will get the solutions, but there is no concept, no conceptual framework is prepared in the book. And the Beer and Johnson book is the best book which I have read in BTech when I was a student at BIT Sindri. And during the MTech study, I take this book as a dictionary of engineering, a study of, and always I consult this book. This book is very impressive and the pictures are very clear and बहुत अच्छे ढंग से इस किताब को लिखा है. But you should gain the knowledge of vector. And जो लड़के का वेक्टर मैकेनिक्स, वेक्टर अलजेब्रा कमजोर है, it is my humble suggestions to each and every students to go and read the vector, and you will learn it within 1 or 2 days. Now, what are the basic principles on which a study of mechanics is based? यह सारे बात हमने कहा कि मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है और फिजिक्स में जो नॉलेज गेन किए हैं, that will be applied here for a study of mechanics. तो आप देखिए, there are 6 fundamental principles on which mechanics study is based. और सारे चीज हमने +2 में पढ़ लिया, सारे चीज. And I told you what is engineering, definition, the use of science knowledge and mathematics knowledge for designing the structures. तो यहाँ पर यह जितने चीज है, there are 4 fundamental law of Newton's which will be applied here. The first law is each and everyone knows. However, I am repeating that if the body is in a state of rest or in motion, the body will be remained in that conditions until unless it is not disturbed by the external force. This is the first law of Newton's motion. It states that every object will remain at rest or in uniform motion unless compelled to change its state by action of external force. यह concept जो है फर्स्ट लॉ में ही आप सब पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे, रटे थे, मेमोरी में रखे थे, बट कंसेप्ट नहीं समझे थे. यू रीड इट अगेन. और इसी में इक्विलिब्रियम का कंडीशंस एम्बेडेड है. यह सेंटेंस में वन लाइन स्टेटमेंट, 2 line statements, the condition of equilibrium is embedded here. If you read it minutely, the body will remain in rest or in motions unless until it is not compelled by the external force. तो जो अगर कंपेल नहीं करते हैं तो it is under equilibrium, whether it is in motion or in rest, until unless it is not disturbed by the external force. This is the in first law, the condition of equilibrium is embedded. इसी में निहित है equilibrium conditions का meaning, that you have to understand. अब देखिए second law क्या है. Now it is disturbed. Now it is disturbed by the external forces. Then the body will accelerate. Here second law है, and that accelerations will be directly proportional to the applied forces. And force is directly proportional to accelerations. And acceleration is nothing but rate of change of velocity. And that proportionality constants, body का कुछ mass होगा, that will be remained constant. That
constant is mass, and therefore force is equivalent to rate of change of velocity and mass times velocity with respect to time. Time के साथ mass will be remain constant. Time के साथ mass change नहीं करेगा. हालांकि it is a not a true statement. यह statement space में जाने के बाद mass भी change करता है, but we are talking at particular point on this earth to learn the concept of mechanics. So mass भी variable है, but it will not be discussed to understand the basic principle of mechanics. And here, for all practical purposes, mass will be remained constant. Only velocity will be different, and that velocity difference of velocity will become accelerations if it is differentiated with time. And dv upon dt, differential coefficient with respect of time, will be known as accelerations. सभी जानते हैं ये सब बात. थर्ड लॉ है न्यूटन्स का. थर्ड लॉ है फोर्स ऑफ एक्शंस एंड रिएक्शंस will be equal in magnitude, opposite in sense, and same line of actions. यह तीन बहुत important equations है, and this is known as, यह classical mechanics का fundamental principle है. Now we are living in a age of quantum mechanics, but Newtonian mechanics जो न्यूटन ने यह crude definitions दिया है, still it is valid for designing any structures. Space structure का बात छोड़ दीजिए. And the fourth principle is Newton's law of universal gravitation. And if there is two body or two particles separated at distance d, then there will be a force of attractions or repulsion will be there, and that force will be nothing but a product equivalent to product of mass and inversely proportional to a square of distance. And here the constant is nothing but a gravitational constant, which is g. So yeah, fourth important principle है, and the fifth principle is principle of transmissibility. यह बहुत important principle है to learn the mechanics, engineering mechanics. The statement is like that: state that the point of application of force can be moved anywhere along its line of actions without changing the external reactions force on a rigid body. The effect will be remain same. I have reproduced it by 3 figures. Now you see in first figure, the force is acting at the back of the square rectangle, and now the point of application is shifted, and the effect will be remain same. Equivalent sign is given there, and now you see in a L type beam, where the point of application is now changed in a second figure, and now you see the rigid body, and rigid body per forces are acting, and now it is idealized at a point, and it has become a concurrent force. This all concept will be used here in study of engineering mechanics. And the sixth important principle for a study of engineering mechanics is universal law. Each and every students knows it, the parallelogram law of forces. सभी पढ़ रहे हैं, स्कूल से पढ़ रहे हैं, सभी इसका solutions जानते हैं, and it is a delightful moment for you. Again I am repeating, कुछ को बोर लग रहा होगा, कुछ को अच्छा नहीं लग रहा होगा, यह सेशन डल लग रहा होगा, फिर भी again I am repeating the parallelogram rule of law of forces. And if two forces, concurrent forces, acting at a point represented by two sides of the parallelogram, and then the resultant of these two forces will be nothing but a diagonal of the parallelogram. And here, this is the analytical tools which I have already discussed. Another tool is vector tools, vector P plus vector Q equivalent to vector R. Nothing is doubtful. Each and everyone is clear. You know everything, which I have already revisited again to refresh you, to sensitize you, to motivate you, to provoke you, to gain knowledge.
Now I am coming to a idealizations of a body. Engineering mechanics में क्या करते हैं? If we do not make assumptions, idealizations, it is very much difficult to analyze the structures. Particle has a mass here, but a size that can be neglected. Particle has a mass, but a size. Size को neglect कर दिया particles का. It will have dimensions, but that dimensions will be neglected. When a body is idealized as a particle, the principle of mechanics reduced to a simplified form. क्यों कर रहे हैं? Mechanics को समझने के लिए body को idealize कर रहे हैं as a point. Since the geometry of the body will not be considered in the analysis of the problem. अगर हम body को size को neglect नहीं कर रहे हैं, तो उसके geometry will hinder our process of analysis. Means कि उसका length होगा, breadth होगा, depth होगा, thickness होगा, and it will hinder, it will become obstacles in our analysis, and therefore size effect is neglected. Point में this point is nothing, it is no size. Just to understand just to make analysis, just to make forward to learn mechanics. Particle. Again, all the forces acting on a body will be assumed to be applied at the same point, and that is the force are assumed concurrent. That is the basic issue for idealizations that you have to understand. अगर size effect रहेगा वहां पर, size को consider करेंगे, then it won't become concurrent, and then problem will become complex, and it will be difficult to solve. आज जस्ट हमको मैकेनिक्स पढ़ना है. जब धीरे धीरे आप विद्वान बनिएगा, नॉलेज गेन कीजिएगा, तो साइज इफेक्ट्स भी कंसीडर करेंगे. और पीएचडी के रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं इस पर, एंड वेयर द साइज इज आल्सो कंसीडर्ड, टेकन ऑल इनटू अकाउंट. बहुत सारी चीज ह्यूमनली पॉसिबल्स नहीं है, एंड देयरफॉर वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड मेनी अदर टूल्स. Now I am going to refresh you again a concept of force on a particle. Now you see the force is acting at point P, inclined at angle alpha from the x-axis, or you can say the horizontal. The force is a vector quantity, and it will have magnitude and directions both. This force will have some magnitude and directions. It is inclined with the angle alpha. So first of all, we should again, all of you know the concept of vector and scalar. The scalar will have only magnitude, and vector will have magnitude as well as directions. And force is a vector quantity, will have magnitude as well as directions. Here P is the point of applications of force, and alpha is the direction of force. And here the vector F will be written as bold F, and magnitude is denoted of this force as mod F, or simply F. There may be many forces acting at a point, and the resultant of all these forces, system of forces on a particle, may be reduced to a single force which has the same effect as the system of force. एक पॉइंट पर एक बॉडी पर 100 फोर्स लगा हुआ है, 200 फोर्स एक्ट कर रहा है. इट मे बी रिजॉल्व इन ए सिंगल फोर्स, और उसका इफेक्ट, द इफेक्ट विल बी रिमेन सेम. द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. तो अभी हम दो फोर्स से शुरू करते हैं. एंड बिफोर दैट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स? Two vectors are equal if they have the same magnitude and acting in the same directions. As for example, P is parallel to Q and both have the equal magnitude. But here
now you see another type of vector. The magnitude of force is equal, but both are acting opposite to this. This is the another type of concept of vector. The vector is equal but opposite in sense. Vector addition, parallelogram rule of additions, analytical method, p square plus q square plus 2pq cos theta इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर. यह एनालिटिकल मेथड है जो +2 में पढ़े थे, आप स्कूल में पढ़े थे. नाउ हियर दिस मैकेनिक्स विल बी द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स विल बी सोल्व बाय ए वेक्टर मेथड. हियर द वेक्टर q plus वेक्टर p इक्विवेलेंट टू वेक्टर r और वेक्टर p plus वेक्टर q इक्विवेलेंट टू r. And this is known as a triangle rule. Draw the first vector p and the second vector q and join the tip, head and tail of the vector, and you will get the resultant of the two vectors p and q. Vector p and q will be either equivalent to vector q plus p or vector p plus q. This is known as triangle law, and this vector q plus p equivalent to p plus q is known as commutative law of vector addition, जो कि सारे लड़के जानते होंगे. अब बताइए जानते हैं या नहीं जानते हैं? हेलो हेलो, यस सर, जानते हैं सर. यस सर. नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सीख लीजिए. अगर पढ़ना है तब संजीदगी से पढ़ना चाहिएगा तो आप सीख जाइएगा, नो प्रॉब्लम. बहुत सारे लड़के नहीं जानते होंगे, उनको सीख लेना है ट्रायंगल रूल को. आज जो जानते हैं उनके लिए मजेदार है यह क्लास. आगे बढ़ता हूँ. Polygon rule. Now another rule is known as a polygon rule, where two vectors are actually summed and added to the third one. Here देखिए polygon rule. There are three vectors now. अभी तक 2 वेक्टर कर रहे थे. Now there are 3 vector, p vector, q vector, s vector at some different orientations. तो ग्राफिकली पहले p वेक्टर को हमने हेड एंड टेल को ड्रॉ कर लिया. अब क्या किया कि q के जो हेड है उससे q के पैरेलल में ग्राफिकली उसी एंगल पर यहाँ q को ड्रॉ कर लिया एंड फाइनली s को ड्रॉ कर लिया. तो ट्रायंगल रूल से हो गया वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर s इक्विवेलेंट टू वेक्टर r. अब 3 फोर्स है कंकरेंट फोर्स. द रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट वेक्टर p प्लस q प्लस वेक्टर s. अच्छा, नाउ वी कैन राइट वेक्टर p q इक्विवेलेंट टू p प्लस q and therefore we can write p plus q under bracket plus s equivalent to r. And you see the next figure, p plus q equivalent to under bracket p plus q, triangle rule, or p plus q plus s equivalent to, we can write p plus q plus s equivalent to r. This method, however, it is immaterial. Now you see another type of arrangements where we can write vector p plus vector q plus s equivalent to r, and therefore this is called associative rule. Vector p plus q plus s equivalent to vector p plus q plus s equivalent to r, or p plus q plus s equivalent to vector p plus q plus s, or p plus q plus s. This law is known as associative law of vector addition. यह भी जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो इतना सीख लीजिए. इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है. इट इज ए सिंपल ज्योमेट्री, ईच एंड एवरी वन कैन लर्न इट. वेक्टर सब्सट्रैक्शंस, एडिशन का बात कर लिए. नाउ आई एम गोइंग टू सब्सट्रैक्ट. नाउ सी p का जो हेड से टेल q का नहीं कनेक्ट हो रहा है, दोनों का एक ही पॉइंट से, बट इन ए अपोजिट डायरेक्शंस. तो यह सब्सट्रैक्शंस होगा. देन दिस विल बी वेक्टर p माइनस वेक्टर q, p and q. हाउ, एंड अगेन इट विल बी
a triangle rule. Now I am coming to resolution of forces. Now in a previous slides you have seen there are concurrent forces may be replaced by a single force. That single force is a resultant force, and the effect of that resultant force on the body or a particle will be remained same. यह कंसेप्ट है, यह हमारा हाइपोथेसिस है, यह assumptions है, यह आइडियलाइजेशंस है, यह मेथड है. दैट अब रिजोल्यूशन, अब देयर इज वन सिंगल फोर्स. इट मे बी रिजॉल्व इन ए x directions, in a y directions and a z directions. अगर यह कोप्लेनर फोर्स है then it will have two components, x and y. and यह अगर स्पेस फोर्स है then it will have three components, x, y and z component. When one of two components P is known, the second component Q is obtained using the triangle rule. तो यह P है प्लस Q. तो यहाँ आसानी से हम लिख सकते हैं कि F, this is the F equivalent to P plus Q. Just joining the tip of P to the tip of F. And the magnitude direction of Q will be determined graphically or by trigonometrical. एक मेथड है बच्चों के लिए, यहाँ पर आप ये सब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस को ग्राफ शीट पर भी लेकर के स्केल से ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर सेपरेट. जिस बच्चे को थोड़ा कहीं कोई कंफ्यूजन है, कुछ बात है, तो उसको ज्योमेट्रिकली यू कैन ड्रॉ. नाउ you see how the force will be resolved in a components. Force F can be resolved in a two components having line of action along line A and B. Using the parallelogram rule of law, from the head of F, extend a line parallel to A until it intersects the point B. इसके पैरेलल में इसको ड्रॉ करना है, and you are now able to draw a parallel line to B, and now you are able to construct a parallelogram. And two components P and Q are then drawn such that they extend their tail of F to point of intersections of both these two forces. And the parallelogram rule may be used here to calculate the component, or vector rule is more easier, more effective to calculate the component in a different directions. Now you come to the problem, real problem. Now at a point, two forces are acting. Very simple problem I have taken. जो पढ़े हुए हैं, however it is very interesting. 900 Newton force acting at 30 degree from the x-axis, and 600 Newton force is acting at the 45 degree from the 900 Newton force, and it is acting at the 75 degree from the x-axis. Using the parallelogram rule, triangle rule, and we will find the resultant of this, or vector rule. Now you see, you construct a parallelogram in this way, 900 parallel to 600, you are able to construct a parallelogram. And now you can directly use the parallelogram rule of forces R square equivalent to 900 square plus 600 square plus 2 into 900 into 600, and angle between these two cos 45, you will get the value of resultant. This is the analytical method which you will get the value, or you can write 900 को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, वेक्टर 900 को लिखिए 900 cos 30 I
प्लस 900 sin 30j, एक फोर्स हो गया F1, 600 cos 75 I plus 600 cos 70 sin 75 j, and you will get the vector form, and R is nothing but vector F1 plus vector F2. And you see here R square value using the cosine rule in a different directions. R square here it is in a different directions, 900, 600, not a parallelogram. This is a cosine rule. And here I am using the sine law also, R divided by sine 35, 600 sine 5. Either by this or by these equations in a reverse angle. क्यों लिखे? हम कहे 2 plus 2p की cos theta लिखे. So here instead of the 45 degree, I am taking 135 degree angle, and therefore negative sign is introduced here. And in this way, however, it is a difficult geometrical interpretations for many students, and that you have to learn. You have to learn the geometry book of Hall and Stevens. You should learn. आप उस किताब को खरीद लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिए, ज्योमेट्री बाय हॉल एंड स्टीवेंस. प्राइस 200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे. मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं, दैट आई डू नॉट नो. हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, बट हिंदी में ज्यादा कलमजी है, समझने में ज्यादा दिक्कत होगी आपको. हॉल एंड स्टीवेंस आप गूगल में सर्च कीजिएगा, अमेजन पर सर्च कीजिएगा, यू विल गेट दैट बुक. नाउ दिस प्रॉब्लम आई हैव सोल्व बाय analytical method, parallelogram rule of addition. You see here P is 900 cos 30 plus 900 sin 30j, Q is cos 75i cos sin 75j, and दोनों को जोड़ दिया, R equivalent to vector P plus vector Q, and you have got the value of R 1390.152. This is the accurate solutions. पिछले वाले स्लाइड में you see, पिछले वाला स्लाइड में it is written as 1391, but by vector method approximately same. I have got this 1390.152 Newton. Newton यहाँ पर है, that is missing. I have not written, missed it. And now you see by another equation, parallelogram rule very simple है. कैसे निकालेंगे इस इक्वेशंस को, कैसे डिराइव किया, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. यह पैरेललोग्राम से यहाँ पर इसके टिप से यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द बेस एक्स एक्सिस पर, एंड दिस इज नॉट बट ए डायगोनल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. और डायगोनल में आप यह पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर इक्विवेलेंट टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो मैं हिंदी में पढ़ा था, वह सब आप हिंदी स्कूल के विद्यार्थी हैं पढ़े होंगे. hypotenuse square equivalent to perpendicular square plus base square. Yeah, very popular equations. Each and everyone should know it. और ओवा hypotenuse से इसका क्या किए, R square को राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिए, यह P था, P, और यह हो गया Q cos थीटा, इसका कंपोनेंट यह Q है, यहाँ से यहाँ तक Q cos थीटा, यह Q sin थीटा हो गया. तो हमने क्या किया, P प्लस Q, यहाँ से P प्लस Q cos थीटा का स्क्वायर एंड प्लस Q sin थीटा का स्क्वायर, एंड यू हैव गॉट द इक्वेशंस. P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos थीटा, Q स्क्वायर प्लस 2Q cos थीटा. इसमें tan अल्फा का वैल्यू निकालना है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट. तो यह इसी राइट एंगल ट्रायंगल में कम Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा, and you will get the value of resultant, magnitude of the resultant, as well as direction of the resultant. Very simple equations, very handy, very friendly, and each and every one should know it. Now you come to another type of problem. कल अविनाश भूषण जी आपके साथ ट्यूटोरियल में कम से कम 10-15 प्रॉब्लम कल के क्लास में बताएंगे आपको बना करके इस ढंग से, और यह प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है. जस्ट टू टेक मास्टरी ऑफ दिस, विदाउट दिस यू आर नॉट एबल टू बिकम इंजीनियर. यह इतना इंपॉर्टेंट चीज है. नाउ टू
two structural member B and C are bolted to a bracket A, यहाँ पर ठीक है ना, knowing that both members are in tension, that P equivalent to 30 Newton, Q equivalent to 20 kilonewton, determine the magnitude and direction of the resultant force exerted on the bracket by all these two forces. Now you see ट्रायंगल रूल से इसका पॉलीगन्स बना लीजिए। आप इस फिगर को देखिए, यह 50 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इस पॉलीगन्स को 20 न्यूटन फोर्स का, यह 20 न्यूटन फोर्स है और एक 25 न्यूटन 30 न्यूटन का है। यस, इसी पैरेलल डायरेक्शंस में यू ड्रॉ द पॉलीगन्स एंड यू विल गेट दिस ट्रायंगल बाय ड्राइंग द पॉलीगन्स। Closed polygons you will get because we are discussing the equilibrium. The equilibrium जब भी डिस्कस करेंगे they will form the polygons, closed polygons. और angle geometrically we are able to find this 105 degree, 25 degree. तो यह हमें 30 न्यूटन्स एंड 20 न्यूटन्स मालूम है। अगेन बाय कोसाइन ला और साइन ला, इसको अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो you extend this and you will form the half portion और आ जाएगा, you will get the parallelogram। इसके पैरेलल खींच दीजिए यहाँ पर, इसके पैरेलल यहाँ खींचिए, will get the parallelogram and find the angle and you will get the results। and using sine rule, इसको इस फोर्स को 30 न्यूटन, इस एंगल को 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय cos 20, ये दिस एंगल you will find। और इसको वेक्टर रूल से भी बना सकते हैं। we can write here the, इस फोर्स को क्या लिखेंगे, x से इंक्लाइंड है, इस फोर्स को Q फोर्स को हम लोग लिखेंगे 30 किलो न्यूटन cos 50 I, 30 sin 50 J, इसको लिख लिए 20 cos 25 I प्लस 25 20 sin 25 J। डायरेक्शंस इसका देख लेंगे, वेदर इट इज इन नेगेटिव डायरेक्शंस या दोनों x माइनस x हो जाएगा एंड सम इट r इक्विवेलेंट टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड यू विल गेट द आंसर। तो वेक्टर रूल से सबसे आसान है, विदाउट गोइंग इन दिस polygons it is more complex and vector rule is more easier। Now we come to the rectangular component of force. This is force and what will be the rectangular component, F ka Fx and Fy। How I should write Fx component, vector F ka Fxi we shall write। This Fx is nothing but a magnitude, I am introducing a unit vector along x y। Z में होगा I J K will be the unit vector which magnitude will be 1 and directions will be in the x directions and y directions and z directions। So therefore in two-dimensional we shall write vector F resultant vector equivalent to Fxi plus Fyj। And what will be the value of Fx? This is nothing but F cos theta, or Fy will be nothing but F sin theta, magnitude of the force। और इसको वेक्टर में लिखना है F cos theta I plus F sin theta J, it will be written। Now, हेलो, हल्ला मत कीजिए, म्यूट कर दीजिए। Determine the resultant of three forces below। अभी थ्री फोर्स को लिखना है, बहुत आसान तरीका है वेक्टर रूल से। इसको लिखिए 350 cos 25 I 350 sin 25 J। यह पहला वेक्टर लिख लीजिए 350 को। इस वेक्टर को लिखना है 845 and 25 कितना हो गया, 4 2 6 70। 800 cos 70 I प्लस 800 sin 70 J। और इस वेक्टर को लिखना है तो यह हो गया इस वेक्टर का 600 cos 60
I माइनस हो जाएगा, the directions is in a negative y x directions and plus 600 sin 60 j, और तीनों वेक्टर को सम कर दिए, you will get the resultant. वेरी सिंपल. और यह ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करना है तो यू विल गेट दिस कंपोनेंट जो मैं बोला, सबको सम कर दीजिए. एफ एक्स कंपोनेंट को 350 cos 25 800 cos 70 माइनस 600 cos 60, और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पर आई इंट्रोड्यूस कर दिए. यहाँ पर भी आई होगा, तीनों एक्स कंपोनेंट है, आई आई आई, तीनों को लिखना है, दोनों को लिखना है. दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, प्लेनर फोर्स है, तो वी शैल इजीली कैलकुलेट द वैल्यू एंड वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा. सम करेंगे तो इट इज वेक्टर 290.8 न्यूटन आई 419.3 न्यूटन जे, और ये दोनों का सम का स्क्वायर करके रूट निकाल दिए, ही विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर. एंड tan थीटा साइन रूल से tan इनवर्स, यू नो दिस, you can easily calculate the value. Now it is a problem. A vast trolley, इस ढंग का प्रॉब्लम आएगा, जस्ट टू सेंसिटाइज यू, आपका दिमाग शार्पन हो, इसके लिए इस ढंग का प्रॉब्लम एक ही है. टू कोप्लेनर फोर्स है और उसका रिजल्टेंट निकालना है. तो एक फोर्स है सब्जेक्टेड टू द 3 फोर्सेस शोन, एक P है इधर और 100,000 न्यूटन इंक्लाइंड एट अल्फा फ्रॉम द y एक्सिस, और फिर 2000 फोर्स है इंक्लाइंड एट अल्फा फ्रॉम द x एक्सिस. अब देखिए देयर आर 3 फोर्सेस, 2 आर अननोन, अनदर इज P इज अननोन, और इसमें हमको P अननोन्स को निकालना है. तो x डायरेक्शंस में हम पहले फोर्स को निकालेंगे. x डायरेक्शंस P, x डायरेक्शंस में P है और इसका कंपोनेंट 1000 साइन अल्फा हो जाएगा. P डायरेक्शंस में पॉजिटिव डायरेक्शंस P प्लस 1000 साइन अल्फा I, और इसका कंपोनेंट हो गया प्लस 2000 cos अल्फा या cos अल्फा I, या इसका जो है माइनस साइन हो गया, तो P प्लस 1000 cos अल्फा साइन I पॉजिटिव 2000 माइनस cos अल्फा I, तीनों को सम कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P. तो P निकल गया, यही निकालना था इसको. 1000 साइन 40, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो यह 40 को सब्स्टिट्यूट कर दिए, प्लस P माइनस 2000 cos 40, एक नेगेटिव साइन है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P विच इज 889 किलो न्यूटन. और FY डायरेक्शंस में we sum it, so you will get the value of resultant force in the Y directions also. Y directions में जो force है, you have got it also. इसका summations कर दिए. Y directions में दोनों का sum हो गया, minus 200 sin 40 and plus 1. This is the component in the Y directions. Now we consider the equilibrium of the particle. A particle is said to be in equilibrium when the resultant of all forces acting on it is zero. The two forces are involved and a body in equilibrium, then the forces are equal and opposite. यहाँ equilibrium में है, two forces equal and opposite. Therefore, this is the best understanding of equilibrium of a conditions, equilibrium of forces. My first law again, Newton's law को हम यहाँ पर again I am narrating that the body will remain in its original position whether it was in rest or in a motion. वो ओरिजिनल पोजिशंस में इक्विलिब्रियम कंडीशंस है जो कि बस उस ढंग से रहेगा. Now you see F1, F2, F3, 3 forces are acting and you have to complete the polygons. And the conditions of equilibrium, they क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशंस? दे शुड फॉर्म द क्लोज polygons. ओपन polygons नहीं होगा. दे शुड, इफ यू ड्रॉ a parallel line
F1 के पैरेलल में ड्रॉ कीजिए, F2 के पैरेलल में ड्रॉ कीजिए, अरेंज कीजिए एंड F3 के, एंड यू विल गेट द क्लोज पॉलीगन. यह इक्विलिब्रियम का कंडीशन है that you should draw the line and you will get the closed polygon. हाँ, अविनाश भूषण जी, अविनाश भूषण जी, हेलो हेलो हेलो. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. यस सर. ठीक. तो दिस इज द कंडीशंस. ये 4 फोर्सेज है, चारों के पैरेलल में इफ यू ड्रॉ द लाइन यू विल गेट द क्लोज पॉलीगन्स. एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या है? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शंस एंड z डायरेक्शन विल बी 0. यह कोप्लेनर फोर्स डिस्कस कर रहे हैं. द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. नोट, कंसीडरिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इक्विलिब्रियम कैन mean that the particle is either at rest or moving in a straight line at constant speed. यह न्यूटन्स का लॉ है. सिंटू, यह कनेक्ट कर लो. यह एक तो आज और दे दिया है 12 बजे से, इसको भी 1 घंटा. दूसरा लैपटॉप में कनेक्ट करो. क्या टॉपिक है? करने वाला है. ठीक है, वही है. तो हाउ यू हैव टू ड्रॉ द polygons? By drawing a parallel lines and you will get the polygons of all the active forces, and you will get the conditions of equilibrium by drawing a polygons. And now we are coming to a free body diagram. How the free body diagram for the supports, particularly pin को कैसे, body how it will be idealized as a particle. तो यह सब free body diagram आप सब सीखे हुए हैं. That should be not discuss here और थोड़ी बहुत बात होगा free body diagram. Now you come to the problem, example problems. या इस ढंग के प्रॉब्लम्स आएगा. डिटरमाइन द टेंशन इन AC एंड AB. यह प्रॉब्लम है. 2 cables are tied by a weight of 200 kg. तो फ्री बॉडी का बात कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. यू फॉरगेट अबाउट दिस. और यहाँ पर ये टैग कर रहा है, तो हियर इट विल बी आइडियलाइज एज ए पॉइंट. हियर इट इज ए पिन सपोर्ट एंड हियर इट इज ए पिन सपोर्ट अगेन. तो यह फ्री बॉडी डायग्राम की है. एंगल हेलो, तो 75 डिग्री एंगल हियर इट इज मेकिंग विद द वर्टिकल. यह बना रहा है. तो यह हियर वर्टिकल से यह 75 बना रहा है. देन हाउ मच इट इज मेकिंग विद द, दिस इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल. यह भी 75 यहाँ से बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ. देन यह यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली. तो इट इज मेकिंग एंगल 75 विद द हॉरिजॉन्टल. सिंपल ज्योमेट्री, इट इज मेकिंग हॉरिजॉन्टल एंगल 75 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड 15 डिग्री विद द वर्टिकल. हियर यह 75 वर्टिकल से है, तो इट विल मेक ए 15 डिग्री फ्रॉम हियर. तो वी कैन इजिली रिजोल्व दिस फोर्सेज इन ए डिफरेंट डायरेक्शन. तो इन x डायरेक्शन दिस केबल टेंशन फॉर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यू सी, वी कैन राइट FBC in or Fy, all the forces in y directions, that is the FBC sin 75, FBC cos 75 and minus 900, 200 kg is converted. यह kg में था, it should be force is a unit in SI system. SI system हम डिस्कस नहीं किए, प्रिलिमिनरी हमको
SI सिस्टम में फोर्स के लिए न्यूटन हम लोग करते हैं, मास के लिए केजी यूनिट है, टाइम के लिए सेकेंड यूनिट है. तो हियर यू शुड अंडरस्टैंड दिस. So this force is converted into a Newton. 1962 newtons आ गया, and then it may be sum in x summation of force equilibrium का conditions है in x directions, y directions and z direction will be 0. This is the condition of equilibrium, and you will get, if you solve this, I will share slide with you and you will get the answer. Again, rectangular components revisited in vector form, summation of force in x direction. This is the same thing, not necessary to discuss here. And now I am introducing the unit vector in a resultant direction, which is lambda, and the force is acting in a space. Now I am not applying force in a plane, coplanar. Now force is in a space, and this F will have three components in x directions, y directions and z directions. And therefore the component of this F will be Fx, Fy, Fz, and this vector will be written as Fxi, Fyj, Fzk, and the resultant of this resultant vector will nothing but summation of F mod magnitude of x, y and z square ka root over, and you will get the answer. And Fx is nothing but F cos theta, Fy is nothing but, here the force F will make a direction cosine with x, y, z will be written as cos theta x, cos theta y, cos theta z. Cos theta x, cos theta y, cos theta z are nothing but a direction cosine of angle theta x, theta y and theta z. And here the force will be written as F under bracket cos theta x, cos theta y, cos theta z equivalent to, और आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, the square of this will be 1, और LMN के फॉर्म में इसको लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, then L square जोड़ M square जोड़ N square equivalent to 1. This is nothing but a magnitude of a unit vector, and you will get the unit vector equivalent to 1 if you square the direction cosines, and a square root of this will give you the value equivalent to 1. And lambda is nothing but a unit vector along the line of action of F. And here you this lambda x square, lambda y square equivalent to, hello. So this is the deliberations force defined by magnitude of 2 points on its line of actions. So here you can make the calculate the coordinates in a space. यह forces का यहाँ पर force is acting at M and directed towards L. So what will be the direction cosines? यह को देख लीजिए. The coordinates here is given as x1, y1, z1. Here coordinate is x2, y2, z2. So difference of this will give you define the vector and इसका directions cosines mn का dxi, dxy, dz, and it is very much useful for you if the position of forces are given, and it may be easily resolved in a x, y, z directions. And this is the method for computing the unit vector, which is nothing but vector mn divided by magnitude of mn, and you will get the value of direction cosines here. And addition of concurrent forces in a space, nothing but vector F equivalent to nothing but Rx vector, Ry, Rz in all three directions. And finally, equilibrium conditions for the so what is the basic equations of equilibrium? Summation of force in x direction, summation
summation of force in y direction and summation of force in z directions will be 0 for solving any type of problems. And now this problem I am leaving you for you by PowerPoints. This is the space problem, and which will be discussed later on. And here now I am concluding this is the solution of the problem, concluding my discussions here. And thank you very much to all. Tomorrow the problem will be solved by Mr. Avinash Bhushan. Tutorial sheet will be given to you, and gate problem will be solved to you and discuss with you. And in the next class, I shall discuss moment, couple, and many other things. And this is introductory deliberations, all about the mechanics, engineering mechanics and engineering. Thank you very much to all my friends. If you have any questions, any doubts, you may ask. But prepare yourself by reading a book on the geometry, basic books, and reading a book on the vector algebra. Thank you very much. Only any questions? Sir, can we get the PDF? Hello. Can we get the बोलिए. PDF of this session? हेलो. सर, हम लोग ये सेशन का वो PDF में पा सकते हैं क्या सर? अभी जो सेशन अरे हाँ, सेशन हम तो आपके लिए ही हूँ ना. I am here to help you. I am here to nurture your career, and it is my pleasure. My greatness lies in this. How I help you. I am principal. This is not my greatness. I am not at the apex. How I can help you? How can I extend my help to you? This is my greatness. I am always ready for you, and I am here to provoke you. I am here to sensitize you. I am here to motivate you to come up. सब में है, लेकिन मैं जितना बात बताया वो 3 चैप्टर का बात है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बियर एंड जॉनसन में आप जाइएगा तो इट इज ऑल इन 3 चैप्टर्स, 3 और 4 चैप्टर्स. तो जितना है उसको प्रॉब्लम्स आप बनाइए और वेक्टर पढ़िए जरूर. वेक्टर से बातें आसान हो जाएगी. और कल के क्लास में आपके ट्यूटोरियल अविनाश भूषण जी सुन रहे हैं आप? यस सर, आई एम लिसनिंग सर. अविनाश भूषण जी, आप कल प्रॉब्लम कम से कम 10-15 बना के लाइएगा. यस सर. हाँ, और स्पेस का भी प्रॉब्लम बनाइएगा, सिंपल प्रॉब्लम, सो दैट दे शुड टू अंडरस्टैंड. ओके सर. और इस ठीक है. और कल बात अविनाश भूषण पवन जी करेंगे आपसे, और मैं डे आफ्टर टुमारो अगेन आई विल सी. और फिर मैं कुछ नया टॉपिक पर आऊंगा. ओके सर. ठीक है. यह पीडीएफ में भेज देता हूँ, जी. ग्रुप में डाल देता हूँ. ईच एंड एवरी वन विल से. थैंक